Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, one can take them. Om Ajnanatimandasya Chansalasalaka Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chitchetayamanopistam Stapitam Yena Bhutala Bhutale Shimat Om Ajnanatimandasya Chansalasalaka Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chitchetayamanopistam Stapitam Yena Bhutale Svamrupradamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shriyo Shriyuda Padakamanam Shriram Vaishnavamsa Shrirupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Svavadutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagarita Shivishakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Chatpate Gopesha Koprakanta Radhakanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Sutadevi Pranamama Priye
Varha Kalptrubhisha Kripa Sindhavesha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhaktavana Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Dasatana Srila Prabhupada Ki. So we continue with our seminar from Shraddha to Prema. That so It's 2 minutes. 1 minute. yeah, shall we wait? Click some recap yesterday's. Yeah. Good. During the last session, the first point we discussed is the Lord is rasa. And we spoke about the Brahma Puja, 5 levels of consciousness. Who remembers these 5 levels of consciousness? Any? Yeah? Annamaya, Yeah? then Pranamaya, Pranamaya? Jnanamaya, Yeah? Vijnanamaya, and then Anandamoyam. And this Anandamoyam does the pure consciousness of the soul, where we can experience this bhakti ras, this in our relationship with Krishna, and then we become joyful. That's our natural condition. That so we have these 5 coverings called the Brahma Puja Pratishta. Annamaya, what was the meaning? What is Annamaya? What kind of consciousness? What does Anna mean? Food consciousness, yes. That. And then Prana Maya. What kind of consciousness is that? You mentioned that when consciousness evolves, we also understand that others are also there for food. Good. Yeah. We become conscious of other living entities. I'm not alone. There are also others who want food, and I have to defend myself. And then Manamoya, or Jnanamoya of Manamoya. What is that? What kind of consciousness?
that it's whereas Anamoya and Pranamoya, there we identify with the body, the gross body. And Manamoya is identification with the mind, yeah, thinking, feeling, willing. That they become interested in getting knowledge and so on. And that therefore it's all called Jnanamoya. But it's still identification with the subtle body. That and the purpose to come to this Anandamoya, we must give up that identification. We must get rid of this identification. In the second canto of the Bhagavatam, chapter 10, verse 6, I think, yeah. Mukti is described. Muktir itvan yata rupam svarupena vyavastiti. Liberation is the permanent situation of the form of the living entity. So the soul has a form, and that's our permanent situation. But we can only attain that after giving up the gross and subtle material bodies. How do we give it up? By giving up this conception that I am the gross body and I am the subtle body. And then one becomes interested in spiritual life. What is Vijnanamoya? What is Vijnanamoya? One understands the difference between body and soul. One understands the difference and he tries to realize his identity of the soul. He's getting into sadhana, spiritual practice, that different levels, but that's so one strives for transcendental realization. That and Anandamaya is our transcendental consciousness. So you can move up one slide and one slide more. Here, that is what we discussed now. That. And then, in the next slide, we discussed Bhakti is independent. Do you remember something of that? It's independent from what? Bhakti? Karma, Jnana. Yeah. Punya, yeah. It's that. We will discuss today also how Bhakti is not dependent on purity. Then we spoke about the partiality of the Lord. How is the Lord partial? You remember? Towards his devotees. That, yeah. To my devotee. This is so interesting. I was thinking the many devotees need Hindi translations. Can I do side by side? Yeah. Just sit here. You need a mic? No, talk now. Okay. So Krishna is impartial and partial at the same time. तो क्या कृष्ण पक्षपाती हैं
या फिर पक्षपात नहीं करते हैं। He's impartial as a super soul. वो परमात्मा के रूप में कोई पक्षपात नहीं करते हैं। As a super soul he is Mayadakshana Prakriti. He controls material nature. परमात्मा के रूप में मायादाक्षिण्य प्रकृति, वो इस भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। He gives all the reactions of one's past misdeeds or good or bad deeds. He knows all the reactions for every living entity and knows all their lives. वो हर व्यक्ति के, हर जीव के पुराने कर्मों का, अच्छे या बुरे का हिसाब रखते हैं, उनके जीवनों के बारे में जानते हैं और उनको उनके कर्मों का फल भी वो प्रदान करते हैं। As a controller of material nature is equal to everyone. You are going to get your reaction. तो इस प्रकार वो भौतिक प्रकृति पर नियंत्रित करते हैं, सभी के प्रति समान हैं, जो आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। That's the material energy. ये है भौतिक शक्ति। But with his devotees, he acts on the transcendental platform, beyond the modes. लेकिन भक्तों के साथ वो दिव्य स्तर पे आदान प्रदान करते हैं, तीनों गुणों के परे। And he reciprocates with them. और उनके साथ वे आदान प्रदान करते हैं। And that's in the Bhagavad Gita, Krishna speaks many verses about his reciprocation with his devotees. ये भगवद गीता में है, कृष्ण बहुत सारे श्लोक बताते हैं कि भक्तों के साथ वो कैसे आदान प्रदान करते हैं। 4:11 Ye yatamam prabhachanti tam sadev vachamyam. So one who surrenders unto me, I reciprocate. चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उनको आदान प्रदान करता हूँ। 9:22 Ananta Sintyantyas Yajna Paripastite Samnityabhyuktam Yogsem Ramyam. For my devotees I protect the Krishna consciousness they have and I give them more and more opportunities to engage in Krishna conscious activities. 9वें अध्याय के 22वें श्लोक भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त जो उनके पास कृष्ण भावनामृत जितना है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता हूँ ताकि वो कृष्ण भक्ति में और अधिक लग सकें, आगे बढ़ सकें। Krishna says, Nami Bhaktya Pranashyati, my devotee will never perish. कृष्ण कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। So these are all reciprocations on the transcendental platform. तो ये जो है दिव्य स्तर पे भगवान इस तरह आदान प्रदान करते हैं। And then we came to the real cause of bhakti, the mercy of the Lord and his devotee. और तब हम भक्ति प्राप्त करने का मुख्य कारण पे आए, वो है भगवान और उनके भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है। Someone remembers something from that we discussed? कुछ उस चर्चा से किसी को कुछ याद है? That if God gives bhakti, you have to give everyone. That's why devotee is not giving everyone. Okay. He will consider and then he will give. So the devotees are empowered by Krishna to give bhakti independently. तो भक्त लोगों को भगवान की तरह शक्ति मिलती है कि वो स्वतंत्र रूप से भक्ति दूसरों को दे सकते हैं। So that's very important. The Madhyam Adhikar devotee, he gives bhakti. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं वो ही भक्ति प्रदान करते हैं। Because he's a preacher. तो इस प्रकार से वो प्रचारक है। So that's the cause of bhakti. तो ये है भक्ति का कारण। But then it said bhakti is not caused by piety or niskam karma. इसके बाद कहा गया है कि भक्ति पुण्य या निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। Because niskam karma means work without desire for the result. निष्काम कर्म का अर्थ है हम कार्य कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते। Karmani vadakarste nafalesh nakachana. You do your karma, your work, but you are not entitled to the results of your work. कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कार्य करें लेकिन आप कर्म के फलों के लिए आप अधिकारी नहीं हैं। That's nice, but it will not produce bhakti. अच्छा तो है ये, लेकिन इससे भक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी।
it's also not caused by piety, पुण्य के द्वारा भी भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, because sukarma, good karma, gives bodily happiness in the next life. क्योंकि जो पुण्य कर्म है, सुकर्म है, वो अगले जीवन में शारीरिक आनंद प्रदान करता है, शारीरिक सुख प्रदान करता है, But it's not good, लेकिन वो तो अच्छा नहीं है, because you have to take birth again to receive it. क्योंकि वो शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए आपको फिर से एक जन्म लेने आना पड़ेगा, And it's not the cause of bhakti. और भक्ति का कारण तो ये पुण्य कर्म बिल्कुल है ही नहीं। We spoke also about austerities and sacrifices. साथ ही हमने तपस्या और यज्ञ के बारे में बात की थी। Sacrifice and austerities, can they cause bhakti? तपस्या और यज्ञ से क्या भक्ति प्राप्त होती है? What did we say last time? पिछली बार हमने क्या कहा था इसके बारे में? तपस like we are distributing foods, that is also charity. और तपस्या और यज्ञ, Yeah, that's charity. charity. Charity giving food to the people, Krishna Prasadam. If it's Krishna Prasadam, and we tell them to chant Hare Krishna, then it's a limp of bhakti. तो इस दान में जैसे हम कृष्ण प्रसाद वितरित करते हैं और फिर उनको कहते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए, So it's a practice of bhakti. तो ये भक्ति का अभ्यास है, And practice of bhakti causes bhakti. भक्ति के अभ्यास से फिर भक्ति उत्पन्न होती है। But ordinary charity, even in the mode of goodness, will not be the cause of bhakti. लेकिन यदि हम दान देते हैं, सतोगुण में भी दान है, तो उससे हो सकता है भक्ति उत्पन्न न हो। That the same is with austerities. हाँ, यही तपस्याओं के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। We perform ekadashi, that's an austerity. हम एकादशी करते हैं, तपस्या है ये भी। But following ekadashi is a limp of bhakti. The ekadashi is the mother of devotion, they say. तो ये जो एकादशी व्रत करना है, ये भक्ति का एक अंग है, ये हम सतोगुण में लेके आते हैं। So that's a good austerity. तो ये अच्छी तपस्या है। But usually austerities are making the heart hard. लेकिन साधारणतया तपस्या करने से क्या होता है, हृदय हमारा कठोर हो जाते हैं साधारणतया, And are particularly are not good for bhakti. और विशेष रूप से बात करें तो तपस्या करना भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। But there are austerities which are uncool, like following ekadashi. ऐसी भी तपस्याएं हैं जो अनुकूल हैं भक्ति के, जैसे कि एकादशी व्रत पालन करना। And then we spoke, bhakti is always distinct from karma and jnana. उसको हमने ये बताया कि भक्ति जो है हमेशा कर्म और ज्ञान से अलग है। So what do you remember about that? उसमें से आपको क्या याद है? Just the main things. मुख्य चीजें। Sambandha Gyan is good for bhakti. Sambandha jnana, that is अनुकूल. Yes, good. संबंध ज्ञान जो है वो भक्ति के अनुकूल है। अच्छी बात है। So there is knowledge which is supporting us in bhakti, in but karma and jnana are mainly obstacles to attain love for Krishna on the higher level. तो जो भगवान की भक्ति के अनुकूल ज्ञान है वो तो सहायक है, लेकिन कर्म और ज्ञान जो है एक तरह से भक्ति में अवरोध है, भक्ति में उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए। Because karma is mostly performed for enjoying fruitive activities. क्योंकि कर्म को साधारणतः व्यक्ति करते हैं इसलिए कर्म की वो सकाम कर्मों का फल भोग सकें। Of course, bhakti is so powerful, even if you perform bhakti for selfish reasons, but you want to please Krishna, you will become purified. लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति यदि आप करते भी हैं
स्वार्थी कुछ कारणों से, लेकिन यदि आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अंततः आप शुद्ध हो ही जाएंगे भक्ति करते करते। Because Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Payojita Janyat Yasvarakyam Jnanam Sayat Ahaitukam. So the practice of bhakti produces knowledge and renunciation. तो भक्ति का जो अभ्यास है, भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो उससे स्वतः ज्ञान और वैराग्य आता है हमारे अंदर। It's a side effect. ये तो जो है साइड इफेक्ट है। You don't have to strive for it separately. इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। If you perform, what happens when you perform devotional service with the intention to please Krishna without getting something in return? जब आप भक्ति में सेवा करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और बदले में कुछ लाभ की आशा नहीं रखते हैं। Gradually you will become attached to Krishna. तो इस तरह जब करेंगे तो धीरे धीरे आप कृष्ण से आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। And when you become attached to Krishna, Shimvatas Vakata Krishna Punya Shyamana Kirtana Vidyantato but only if you don't know the Sridsutam, then Krishna start to cleanse the heart of all unwanted desires and attachment. तो जब इस तरह कृष्ण से आसक्ति बढ़ती जाएगी तब कृष्ण हमारे हृदय को शुद्ध करना आरंभ करेंगे। जितनी भी गलत इच्छाएं हैं उन सभी को दूर करते चले जाएंगे। Then Bhagavad Gita 10:10, then Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna gives you knowledge from within. तो भगवद गीता में बताया 10वें अध्याय 10वें श्लोक में ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्ण आपको हृदय से ज्ञान प्रदान, अंदर से ज्ञान प्रकाशित करेंगे आपके। And you start to lose your attachments from things in this world. और इस बहुत ज़्यादा चीज़ों से आप अपने आसक्ति को कम करता पाएंगे। You start to understand, yes, this body is temporary. आप ये समझना शुरू कर देंगे कि हाँ ये शरीर नश्वर है। Everything what is to achieve in this life is also temporary. जो हम इस संसार में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी क्षणिक है। And you start to have faith in Krishna's words. और आपको कृष्ण की वाणी में विश्वास आने लगेगा। Krishna says, one should not live for the pleasure of the senses. कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। If one lives for the pleasure of the senses, one lives in vain. यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहता है तो वो व्यर्थ ही जीवित रहता है। So you give up all your so-called ambitions in material life. तो इस प्रकार आप इस भौतिक जीवन में कथित जो आपके जो उद्देश्य हैं उन सभी को आप त्याग देते हैं। Because you feel satisfied in your devotional service. क्यों? क्योंकि आप अब भक्ति में सेवा करने में ही आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं। Now today we will discuss the last point in this introduction. Bhakti does not depend on purity, but before going in that, we will speak about faith. तो आज हम इस जो भूमिका है इसका आखिरी विषय चर्चा करेंगे कि भक्ति जो है शुद्धता पर निर्भर नहीं करती है। तो उसमें जाने से पहले हम एक और चर्चा करेंगे, फेथ, विश्वास, श्रद्धा। So bhakti does not depend on faith. तो भक्ति जो है वो भाग्य पर निर्भर नहीं करती। But faith is an indication of spiritual advancement. फेथ और फेथ, Faith, yeah. विश्वास। ये श्रद्धा जो है भक्ति में उन्नति करने का एक मुख्य पहचान है। So, and Krishna speaks about that in Bhagavad Gita. कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, He stresses the importance of faith. श्रद्धा के महत्व पे वो जोड़ देते हैं। Bhagavad Gita 9.3 Ashadadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsari Vartmani. Those who are not faithful in this devotional service, भगवद गीता के 9वें अध्याय के
तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस भक्ति के मार्ग पे श्रद्धा नहीं रखते हैं, they cannot attain me. वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। Therefore, they return to the path of birth and death in this world. इसलिए वे इस संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पे पुनः पुनः आते रहते हैं। So Srila Prabhupada writes in this purpose, if one is faithless, without faith, one cannot accomplish or practice this process of devotional service. तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई श्रद्धाहीन है तो बिना श्रद्धा के इस मार्ग पर उन्नति करना या चरम लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। How can we create faith, develop faith? कैसे हम श्रद्धा का निर्माण करें, कैसे श्रद्धा का हम विकास कर सकते हैं? You tell me. आप बताइए। Associating with devotees. Associating with devotees. भक्तों की संगति करके। Other person. Those who have faith, if you associate with them. With those who have faith, yes. जिनके अंदर श्रद्धा है उनका हम संग करके श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। By hearing the glories of bhakti. By hearing the glories of bhakti or by hearing transcendental knowledge. Yeah. Yes. By hearing about the lives of previous acharyas. Okay. By hearing about the lives of previous acharyas. भक्ति की महिमा को सुन के या दिव्य ज्ञान को सुन के या आचार्यों के जीवन को सुन के हम श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। Studying the literatures. But yes, by getting transcendental knowledge, hearing about Krishna, that yeah. वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके दिव्य ज्ञान को समझ के हम श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। By giving them the association of knowledge. Yeah, that is the key point. Srila Prabhupada writes in the purport of 9.3 Bhagavad Gita, second line, faith is created by association with devotees. तो भक्तों का संग हम त्याग करना चाहिए, और ये जो मुख्य बिंदु है श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि श्रद्धा का जो विकास होता है वो भक्तों की संगति में ही होता है। So many can hear the scriptures, but finally still they have no faith in it. तो बहुत लोग शास्त्रों से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर विश्वास नहीं आता उन बातों को लेके। Therefore they cannot stay fixed in devotional service. इसलिए वो भक्ति में सेवा में स्थिर नहीं हो पाते हैं। Therefore Srila Prabhupada says faith is a most important factor in Krishna consciousness. इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रद्धा जो है कृष्ण भावनामृत में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। And Srila Prabhupada gives in this purport a definition of faith. और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में श्रद्धा की परिभाषा देते हैं। What is faith? श्रद्धा क्या है? It's that this is from Chaitanya Charitamrita. Faith is the complete conviction that simply by serving Krishna I will achieve perfection. ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि फेथ जो है यह दृढ़ विश्वास है कि केवल कृष्ण की सेवा करने से ही मुझे जो है सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। So that is, if we go to the 4th chapter of the Bhagavad Gita, at the end, तो हम भगवद गीता के 4थे अध्याय में जाएं। that in 439, Srila Prabhupada speaks about the faithful. 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है Shraddha Vallabhate Jnanam Tatpara Samyatendriya Jnanam Labdha Paramsantin Ashranadi Gacchati. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge. जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है And who subdues his senses और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है is eligible to achieve such knowledge. वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, And have achieved it, और इसे प्राप्त करते ही he quickly attains the supreme spiritual peace. वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। So in the purpose Srila Prabhupada, the first thing of faith is you firmly believe in Krishna and his words. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि श्रद्धा की बात करें तो पहली बात तो ये है
कि आप श्री कृष्ण और उनके शब्दों में आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। And he repeats here the same definition. Faith is thinking that when I act in Krishna consciousness, I will get the highest perfection. और श्री प्रभुपाद यहाँ उसी परिभाषा को दोहराते हैं कि श्रद्धा या दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ही मैं चरम सिद्धि को प्राप्त कर लूँगा। So, and faith, he says, is attained by two things. और यहाँ बताया कि श्रद्धा दो प्रकार से प्राप्त होती है। Devotional service एक तो भक्ति में सेवा से, and the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. राम हरे हरे का जप कीर्तन करने से। Yeah. And one should control the senses, follow the four regulative principles. और व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। So then you can attain perfection in knowledge of Krishna consciousness. You can understand Krishna consciousness. तब आप कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण को आप समझ सकते हैं। But in the next verse, Krishna says, but those who have no faith, अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, they will fall down, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति and they have no happiness in this world and in the next. शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। They may have even faith in the scriptures like Bhagavad Gita, हो सकता है कि उनका भगवत गीता शास्त्रों में विश्वास हो, but they do not believe in the Supreme Personality of God. लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। So, now we have understood what Srila Prabhupada says about faith. तो अभी हमें समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद श्रद्धा के बारे में क्या कहते हैं, श्रद्धा क्या है। So now we can discuss. अब हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। So, Vishwanath Chakravarti writes, the dependence of karma and yoga on conditions of purity that is well known in the Smriti scriptures. So the dependence of karma and yoga on conditions of purity. तो जो कर्म योग है वो शुद्धता के ऊपर उसकी क्या निर्भरता है। So if you want to become a yogi and join a yogi school, यदि आप योगी बनना चाहते हैं और योगी स्कूल में आप दाखिला लेते हैं, you must be a celibate. तो आपको ब्रह्मचारी होना चाहिए, Otherwise you are not allowed. अदरवाइज आपको अनुमति नहीं है। That's the yoga school. ये Yeah. योगा स्कूल की बात। There's so many conditions. बहुत सारी शर्तें हैं, But these conditions are not there for bhakti. लेकिन भक्ति के लिए ये सब शर्तें लागू नहीं होती हैं। That and it says the process of chanting the holy name of Krishna Kirtan is not only limited to Kali Yuga. क्या है कि ये जो कृष्ण कीर्तन करने की जो विधि है ये केवल कलयुग तक ही सीमित नहीं है। And he gives some evidence for that. और इसके लिए चक्रवर्ती पाद जो हैं कुछ प्रमाण देते हैं। He quotes verses and he says, there is no restriction of place or time for one who has become greedy or eager to chant the holy names of Krishna. श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो कृष्ण के नामों को कीर्तन करने के लिए लालची है, जिसके अंदर वो उत्साह है, तो उसके लिए समय काल पात्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। So in the chanting of the holy name there is no restrictions of place, time and purity. तो भगवान के नामों को कीर्तन करने में देश काल पात्र और शुद्धता कोई विचार नहीं है। And bhakti is not dependent on faith. और भक्ति जो है श्रद्धा पे निर्भर नहीं है। Although faith is important in the process, हालांकि श्रद्धा महत्वपूर्ण तत्व है इस विधि में, it's not depending on that faith. लेकिन भक्ति फिर भी श्रद्धा पे निर्भर नहीं करती है। That another quotation here, the name of Krishna when chanted even once, एक और इस संबंध में वक्तव्य है कि जब कृष्ण के नाम का एक बार भी जप किया जाता है, with faith or without faith,
it can deliver any man. श्रद्धा या श्रद्धा से, तो या श्रद्धा के बिना, तो ये हर किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। So this is from the Hari Bhakti Vilas. ये हरि भक्ति विलास से कहा गया है। The chanting of Harinam is the most beneficial of all spiritual and pious activities. भगवान के नामों का कीर्तन सारे शुभ और पुण्य कर्मों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। It is most relishable than the sweetest honey. सबसे मधुर है ये, शहद से भी अधिक मधुरतम है। It is the transcendental fruit of all Shruti scriptures, the Vedas. श्रुति वेद शास्त्रों का ये दिव्य फल है। That if any person chants Harinam offensively, without offenses, ओके, यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करते हैं अपराध रहित होके, even once, एक बार भी, with Shraddha, with faith or without faith, चाहे श्रद्धा से किया हो या श्रद्धा के बिना किया गया हो, Harinam immediately offers him liberation. हरिनाम तुरंत उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। But it says, what was the condition in this? लेकिन इसमें एक शर्त है। कौन सी शर्त है? Offensively, without offenses. Again, these 10 offenses we repeat every morning. It's so important. अपराध रहित होना चाहिए हरिनाम, इसलिए ये 10 अपराध को ध्यान में रखना और इनसे बचना महत्वपूर्ण है। हम सुबह सुबह इसको दोहराते हैं। So bhakti is not dependent on purity. तो भक्ति शुद्धता पर निर्भर नहीं। For whether the name is chanted impurely or purely, it will deliver the fallen souls. हरिनाम शुद्ध रूप में या शुद्धता के बिना लिया गया हो, ये बद्ध जीव का उद्धार करेगा ही करेगा। But in karma yoga or in Ashtanga yoga, if there is impurity, it's a great obstacle. लेकिन यदि कर्म योग या अष्टांग योग की बात करें तो अशुद्धता है यदि, तो ये एक महान अवरोध है सिद्धि की दिशा में। Also, there is more about the holy name. Mantroina svaroto varnato vamitta prayukto natam martam atayatandra satru sarvato paradat savakvacho yajamanam inasti. If a mantra is pronounced correctly or incorrectly, तो ये भी एक भगवद में कहा गया है कि यदि किसी मंत्र को सही रूप से या गलत रूप से उच्चारण किया जाता है, then the mantra, the Vedic mantra, will have no effect. तो यदि वो वैदिक मंत्र है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। It may even be harmful. यदि गलत तरह से उच्चारण किया गया है तो वो और हानि पहुंचा सकता है। That इंद्र शत्रु, that of course the holy name, निश्चित रूप से जो हरिनाम है, that when we chant the holy name with the right intention, यदि हम सही मनोभाव से हरिनाम का जप करते हैं it will be effective. तो वो प्रभाव अपना दिखाएगा। The Chinese, they say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. They can't pronounce the R, the letter R. तो जो चाइनीज हैं वो आर जो रे र है उसका उच्चारण नहीं कर पाते, हले हले बोलते हैं वो, हले कृष्णा, ऐसे हले कृष्णा 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 हले हले। Yeah. So, can they not chant the holy name? No. तो क्या वो हरिनाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। And I think in the Bengalis they say Hare Hare Ramo, no? मैं सोचता हूँ कि जो बंगाली हैं वो हरे रामो इस तरह बोलते हैं। Yeah. Anyway, but we speak about this purity, that you must be pure practically to practice this jnana yoga or Ashtanga yoga.
ठीक है, शुद्धता की बात करें तो जो ज्ञान योग है या अष्टांग योग है, इनका अभ्यास करने के लिए शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है. That jnana yoga is also dependent on karma yoga. You first must do karma yoga to purify you, and then you can give up activities and you can study and renounce. तो ज्ञान योग भी कर्म योग पे निर्भर है. इसलिए आप कर्म योग करते करते पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, फिर आप जो है उसको त्याग करके शास्त्रों का अध्ययन करके फिर आप त्याग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. So, because with karma yoga, you must first purify your gross desires. क्योंकि कर्म योग के माध्यम से पहले आपको अपनी स्थूल इच्छाओं को शुद्ध करना पड़ेगा. And then you can start practicing jnana yoga with a heart purified from these gross desires. उसके बाद आप स्थूल इच्छाओं से हृदय आपका मुक्त हो गया, उसके साथ आप ज्ञान योग का अभ्यास कर सकते हैं. You see that also in the Ashtanga yoga. In the beginning, you have to do activities to pure yourself. अष्टांग योग के अभ्यास में हम यही देखते हैं, शुरू में आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं ताकि आप शुद्ध हो जाएं. But there were great practitioners of jnana yoga and then bhakti yoga, and then Ashtanga yoga. I mean, not bhakti yoga. लेकिन जो ये महान जो अभ्यास करने वाले हैं ज्ञान योग और अष्टांग योग के, we have Kamsa. He practiced this jnana yoga. जैसे हमारे सामने कंस है, उन्होंने ज्ञान योग का अनुशीलन किया, अभ्यास किया. Also as Hiranyakashipu. साथ ही हिरण्यकश्यप भी है, Great austerities. बड़ी तपस्या की उन्होंने. Also, Ravan was a practitioner of jnana. रावण भी ज्ञान योग के प्रैक्टिशनर अभ्यास करता था. They were not all worthy of praise. प्रशंसा के लिए लायक कोई भी नहीं है इनमें से. But when we practice bhakti, even if we are affected by lust, you still are qualified to practice bhakti. लेकिन यदि हम भक्ति का अभ्यास करते तो हो सकता है हम काम भाव के द्वारा पीड़ित भी हो जाएं या प्रभावित भी हो जाएं, फिर भी आप भक्ति करने की योग्यता आपको रहती है. And by performing bhakti, lust and all the impurities of our heart are destroyed. और भक्ति का अभ्यास करते करते जो काम भाव है हृदय में जो भी अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं. And Krishna says in the Bhagavad Gita, yes, even my devotee, if lust appears in his heart, is not condemned, is still a sadhu. मतलब कृष्ण भगवान में कहते भी हैं, यदि मेरे जो भक्त है उसके हृदय में यदि काम भाव का उदय होता है तो भी वो त्याज्य नहीं है, वो फिर भी साधु है. Sadhu eva samantavya. साधु रेव समन्तव्य. Yeah, that we see also Ajamil was chanting the holy names, that and he was saved by the Vishnudutas. हम देखते हैं अजामिल वो भी हरिनाम का कीर्तन कर रहे थे और विष्णुदूतों के द्वारा उनको बचा लिया गया. So Ajamil uttered the holy name of the Lord without the intention to utter the name of the Lord. अजामिल ने हरिनाम नारायण नाम पुकारा, लेकिन नारायण नाम पुकारने की मनोभाव नहीं था कि भगवान को बुला रहा हूँ. That so he still got purified, although his chanting was not pure. फिर भी अजामिल शुद्ध हो गए, हालांकि उनके जो नारायण का उच्चारण था वो शुद्ध नहीं था. His chanting was considered namabhas. उनका जो उच्चारण था वो नाम आवास की श्रेणी में आता है. We can chant namabhas if we chant without the 10 offenses. Then we enter namabhas. नाम आवास पे हम कब आएंगे? जब 10 नाम अपराधों से मुक्त होकर जब नाम करेंगे तब नाम स्तर में आ सकते हैं. That, but the Lord gives easily liberation, but not bhakti. तो भगवान मुक्ति दे देंगे लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देंगे. It's said here in the 6th canto, I think, there it said Muktanama Pisidana Narayana Parayana Sdurlabha Prasantashma Kochapi Mahamuni. Among thousands of liberated jnanis and yogis,
छठे स्कंद में आता है कि हजारों हजारों ज्ञानी और योगियों में से so thousands of them, one may become a devotee of Narayan or Krishna. ऐसे हजारों में से हो सकता है कोई एक आध नारायण और कृष्ण का भक्त बने. That so the fruit of bhakti is finally prema. तो भक्ति का जो फल है, चरम फल, वो है प्रेम. So it goes far beyond the lower goals of dharma, artha, kama and moksha. और ये जो प्रेम है, ये जो निम्न लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे बहुत बहुत ऊपर है. And it's completely independent. और ये पूर्णतः स्वतंत्र है. That so bhakti, because bhakti is of the same nature of the Lord. क्यों? क्योंकि भक्ति का जो स्वभाव है, जो भगवान का स्वभाव, वही भक्ति का स्वभाव है. So the conclusion of Vishwanath is, if one considers to follow another process than bhakti, is not very intelligent, no good judgment. तो चक्रवर्तीपाद के जो सिद्धांत वो यही दे रहे हैं इससे सार रूप में कि जो भक्ति की विधि और कोई विधि को अपनाने की सोचता है, प्रयास करता है, तो वो बुद्धिमान नहीं है. He says if a human being does not take to the process of bhakti, is not a human being at all. That's quite, मनुष्य भक्ति विधि को ग्रहण नहीं करता है, समझो मनुष्य ही नहीं है. That now we begin the next chapter. Just let's see. अभी हम अगला अध्याय आरंभ करते हैं. So the effects of bhakti. The next slide. Effects of bhakti. Yeah. भक्ति के प्रभाव. Bhakti makes the heart lose its iron-like qualities and acquire spiritual qualities of pure gold. Bhakti. भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय में जो लोहे की तरह जो कठोर जो गुण हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं और शुद्ध सोने के जो आध्यात्मिक गुण हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं. That so we discussed about faith. Faith is cultivated by association with devotees. हमने श्रद्धा के बारे में चर्चा की. श्रद्धा का विकास होता है भक्तों के संग के माध्यम से. So that's sadhu sangha. साधु संग के माध्यम से. And then we take shelter of the devotees and learn from him the practice of bhakti. श्रद्धा के बाद साधु संग, जब हम भक्तों की शरण लेते हैं और उनसे भक्ति की विधि के अभ्यास के बारे में सीखते हैं. So we take shelter of a bona fide spiritual master, follow his instructions. आध्यात्मिक गुरुदेव की शरण लेते हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हैं. And then we start to perform bhajan, the practice of devotion. उसके बाद हम भजन करना आरंभ करते हैं, भक्ति में सेवा का, भक्ति में विधि का अनुशीलन, भजन क्रिया. So Vishwanath Chakravarti Thakur writes, the wish-yielding creeper of pure bhakti, which grows in the heart, is the refuge of the devotees. So the plant of bhakti, of pure bhakti, is growing in the heart of the devotee. तो जो यहाँ चक्रवर्ती बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति का जो बीज है वो भक्तों के हृदय में बोया जाता है. And the devotee, he takes shelter of watering this creeper of bhakti. That. और भक्त जो है इस भक्ति लता के बीज को पोषण करने में शरण ग्रहण करता है. And he comes to the point of desiring only love for Krishna bhakti. अभ्यास करते करते वो उस बिंदु तक पहुंच जाता है जब वो केवल कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा ही उसके मन में रह जाती है. That's the only fruit he wants. He wants to love Krishna. यही फल का ही भक्त अभिलाषी है, कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं. And he becomes determined to attain it. और एकदम दृढ़ ऐसी हो जाता है कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है. Like bees go from flower to flower and they want the nectar, always the nectar. जैसे मधुमक्खियाँ फूल से फूल जाती है, बस अमृत ही ढूंढती है, शायद अमृत ही मुझे चाहिए शायद.
that but to make this creeper, this little plant grow, that what makes it grow? लेकिन जो भक्ति लता है या छोटा पौधा है, इसको बढ़ाना है तो किन किन माध्यमों से ये वृद्धि करेगा? It's the favorable attitude and to devotion of the Lord. ये वृद्धि करेगा जब भगवान की भक्ति के प्रति हमारा अनुकूल मनोभाव रहेगा, फेवरेबल एटीट्यूड रहेगा जब. So the devotee loses his material qualities and instead he develops spiritual qualities. तो भक्त जो हैं अपने भौतिक गुणों को खो देता है, नष्ट हो जाते हैं और उसके बजाय आध्यात्मिक गुणों का उसके अंदर विकास होने लगता है. So, and then he speaks of what we hear in Nectar of Devotion about this plant, this little plant, this creeper grows and gets 2 leaves. और इसका वर्णन आता है कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्ति लता के बीच जो लता है इसका विकास होता है और 2 पत्तियां इसमें पहले आती हैं. Who knows the names of these leaves? कौन जानता है इन पत्तियों को, 2 पत्तियों का नाम क्या है? Yes, yeah, Klesha and Shraddha. Klesha and Kleshachni and Subhada. That so Klesha Agni. तो क्लेशा अग्नि. Klesha is suffering. क्लेश कष्ट में है. Agni burns the suffering. Agni burns the suffering. Agni burns the suffering. हाँ, ओके. जो अग्नि है कष्ट को जला देती है. So Kleshachni means that the dissolution or the end of all suffering. इसका मतलब सारे कष्टों का अंत हो जाता है, प्रलय हो जाती है. And it's called Subhada, one attains auspicious qualities. और साथ ही शुभदा का अर्थ है कि आध्यात्मिक गुण हमें प्राप्त होते हैं. That and Vishwanath Chakravarti Thakur says there are 2 processes. और चक्रवर्ती कहते हैं कि 2 विधियां हैं. Well, it says that the upper side of the leaf is raga. वो कहते हैं कि जो पत्ती का जो ऊपरी भाग है वो है राग. That means one's service becomes spontaneous. इसका मतलब कि जो किसी की जो सेवा है भगवान के प्रति वो स्वतः स्फूर्त भाव से अपने आप वो सेवा करने लगते हैं. That you develop a taste for attaining the Supreme Lord. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक रुचि आ जाएगी. And you want to develop a relationship with the Lord in a certain mood. और एक विशेष भाव में या एक विशेष संबंध में आप भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहेंगे. And the lower side of these 2 leaves और इन 2 पत्तियों की जो निचला भाग है is the Vaidhi Bhakti, the following of scriptural rules. वो है वैदिक भक्ति, यानी कि शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति करना. Because one does not have yet spontaneous love for the Lord. क्योंकि अभी तक किसी को जो साधक है उसको भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम आया नहीं. So that's Vaidhi Sadhana Bhakti. तो ये है वैदिक साधना भक्ति. So you have Vaidhi Sadhana Bhakti and Raga Bhakti. तो है वैदिक साधन भक्ति और राग अनुग भक्ति. And by following Vaidhi Sadhana Bhakti, we will become purified. And gradually we will come to the upper side of the leaf and it will become spontaneous. तो वैदिक साधन भक्ति का अभ्यास करते करते जो कि पत्ती का निचला स्तर है आप शुद्ध हो जाएंगे और फिर आप ऊपर पत्ती के ऊपरी स्तर पे आएंगे जो कि स्वतः स्फूर्त भाव से भगवान की सेवा करेंगे आप. Yeah. But both sides लेकिन जो दोनों ऊपरी और निचली भाग है
they share this quality of klesagni. All this suffering is going. वो क्लेशाग्नि यानी सारे कष्टों को नष्ट कर देंगे। And subha means auspicious qualities. और शुभ मतलब अच्छे गुण। Now first we will speak about this klesha, this suffering. अभी पहले हम क्लेश की बात करेंगे। कष्ट क्या है? कष्ट What are the causes of suffering? कष्ट के कारण क्या क्या है? कष्ट क्यों आते हैं? The pap. जिसे पाप, सिन। Okay. ठीक है, पाप। Ignorance. Ignorance. अज्ञान। Desire. डिजायर। Desire. हाँ, इच्छा। Material desire, yes. Yeah. Previous conditionings. Previous conditionings. पुराने जो हमारे बद्ध जीवन की अवस्था है, Mhm. अनर्थास इसे। Anarthas, yes. अनर्थ। That is good. And that, Forgetfulness of Krishna. please, Forgetfulness of Krishna. forgetfulness of Krishna. कृष्ण की विस्मृति। Vishwanath Chakravarti Thakur put everything what you said in a more structured way. जो चक्रवर्ती पाद हैं, जो भी आप लोगों ने उत्तर दिए, उसको एक संरचनात्मक रूप में बताते हैं। I will explain it up two ways. मैं इसको जो है दो तरीकों से समझाऊंगा आपको। The way that we find here in Madhurya Kandambini, एक तो जो मधुर कादम्बिनी में हम पाते हैं, and then the way of Bhagavatam also describes it. और भागवतम में भी इसको वर्णित किया गया है। So the first klesha and the root cause of suffering is avidya, ignorance. तो पहला जो क्लेश का जो मुख्य कारण है वो है अविद्या। What is the ignorance? अविद्या क्या है? Is to take the impermanent as the permanent. अविद्या है कि जो क्षणिक वस्तु है उसको स्थायी मान लेना, यही अविद्या है। To take what is full of misery to be blissful. जो कष्टमय है बिल्कुल अवस्था, उसको हम आनंदमय अवस्था मान लेते हैं। To take what is not the self as the self. जो हमारी पहचान नहीं है उसको अपनी पहचान मान लेते हैं। And that ignorance or avidya causes asmita. और ये जो अविद्या या अज्ञान, इससे अस्मिता का जन्म होता है। So because we are in ignorance, we are developing asmita. Asmita is false ego. क्योंकि हम जो अज्ञान में हैं तो अस्मिता में आ जाता है, अस्मिता का जन्म होता है। अस्मिता मतलब है मिथ्या अहंकार। And then we think, I, this body, I'm the enjoyer. और फिर हम सोचते हैं मैं हूँ शरीर, मैं हूँ भोक्ता, And this is mine. और ये मेरा है। So that is false ego. ये मिथ्या अहंकार है। And then what develops from that false ego? मिथ्या अहंकार से किसका जन्म होता है? We become attached to things in this world for enjoyment. हम इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनसे आसक्त हो जाते हैं उनको भोग करने के लिए। And then raga developed, this attachment and the desire for material happiness. तब राग की उत्पत्ति होती है। ये इच्छा और भौतिक जगत के प्रति आसक्ति का जन्म होता है। And one makes plans to attain this material happiness for the body and the mind. और फिर मन और शरीर के लिए भौतिक खुशी प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाने लगते हैं। And that becomes our goal of life. We want to make the body and the mind happy. फिर जीवन का लक्ष्य हमारा यही बन जाता है कि बस मन शरीर खुश रहे अपना। And therefore we enter duality. और इसलिए फिर हम द्वंद्व में फंस के रह जाते हैं। We are developing dvesha, hate for things what will give the body and the mind unhappiness. तो हम फिर द्वेष करने लगते हैं उन चीज़ों से जिनसे हमें कष्ट होगा शरीर को या मन को। And we want only that what gives happiness to the body. और फिर हम वही चीज़ें चाहते हैं जो शरीर और मन को जो खुशी प्रदान करें, राग और द्वेष। And where is that coming from? और ये सब आ कहाँ से रहा है? Why is it difficult to give up? क्यों कठिन है इसको छोड़ना, राग द्वेष को? Abhinivesha. अभिनिवेश। We have created an obsession in many lifetimes that of this affinity for material things and wanting to obtain them. कई जन्मों से हमने जो है ये भौतिक
चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ा के रखी है और हमारी इच्छा है उनको प्राप्त करने की, इसके कारण जो है हम छोड़ना नहीं पाते हैं अभिनिवेश। And we become, at the end, this is the cause of fear in our life. This is the cause of developing fear. ये जो आसक्ति है इसके कारण ही जो है हमें जीवन में भय होता है। Fear of death. Fear of death. Fear of death, मृत्यु का भय। Yeah. So interesting. All these points made here, you have said. Everyone, it was, but here it's in a very structured way. जो पॉइंट आपने बताए वो सभी यहाँ पे आ गए, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ बताया गया है। And it's good to learn these terms and get that structure. Then you can actually explain it. तो ये अच्छा है कि हम ऐसी जो शब्दावली है इसको सीखें, तो अच्छे से आपको समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। So avidya first. पहले अविद्या, ignorance, जो कि अज्ञान है। And then what develops from this? Asmita. Asmita, false ego. मिथ्या अहंकार। And then because you are identifying with the body, what's happening? Raga. पहचान करते हैं तो फिर आया राग। You want material enjoyment. भोग चाहते हैं। And what do you don't want? और क्या नहीं चाहते हैं? Dvesh. द्वेष। Hate for things that. And finally, और अंतिम क्या है? abhinivesh. अभिनिवेश। That fear of death. मृत्यु का भय। Well, in the Bhagavatam, this is also explained. तो श्रीमद् भागवतम में भी ये समझाया गया है। In the second canto, I don't remember the verse, but there Brahma is starting his Visarga, his secondary creation. जो द्वितीय स्कंद में है उसमें ब्रह्मा जी जब अपनी विसर्ग यानी कि द्वितीय जो सृष्टि है उसको गौण सृष्टि की उत्पत्ति करना आरंभ कर रहे हैं। That and before starting creating living entities and giving them bodies, तो जीवों का निर्माण करने और उनको शरीर प्रदान करने से पहले जो है he creates for the spirit soul 5 layers of illusion. 5 परतें बनाई ब्रह्मा जी ने, अज्ञान की 5 परतें जीव के लिए। So for the spirit soul to function in a body, it must be under these 5 illusions. तो यदि जीवात्मा इस शरीर के अंदर यदि सक्रिय रह पाए, इसके लिए ये 5 परतें उसके डाली गई भ्रम की। That and the first illusion is called tamas. और जो पहला जो मोह है वो है तमस, पहली परत। And tamas is described as forgetfulness of Krishna. और तमस का अर्थ इसको समझाया गया है कृष्ण की विस्मृति। So that's the first thing, we forget Krishna. तो पहली चीज यही होती है कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। To be active on the spiritual platform or on the material platform, we must first forget Krishna. भौतिक स्तर पे कार्य करने के लिए पहले हमें कृष्ण को भूल जाते हैं, पहले ये होता है। And then when you forget Krishna, then moha comes, illusion. तमस यानी कृष्ण को हम भूल जाते हैं, उसके बाद आता है मोह। Because if you forget Krishna, then you forget that Krishna is the owner of everything and the source of everything. क्योंकि जब आप कृष्ण को भूल जाते हैं तब आप ये भूल जाते हैं कृष्ण सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सभी के स्वामी हैं। And because Krishna is the source of everything and is the owner of everything, कि कृष्ण सभी वस्तुओं का स्रोत हैं, सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, and is the enjoyer. और वो भोक्ता भी हैं सभी वस्तुओं के। So if we forget Krishna, we start to identify with this body as the enjoyer. तो जब हम ये सब भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, तो हम ये शरीर को सोचते हैं कि ये शरीर जो है ये भोग करने के लिए बना है सभी वस्तुओं का। And we start to think everything in this world is for my enjoyment.
और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है वो मेरे भोग के लिए ही तो है। And then mind develops. This mind develops. That's Mahamoha. तो मैं मेरा इसका जन्म हो जाता है। So first, मेरा मतलब महामोह में चले जाते हैं। first you have tamas, I forget Krishna. पहले तमस है, कृष्ण की विस्मृति। Then you have moha. दूसरी परत मोह। I identify with the body as the enjoyer. शरीर से पहचान करते हैं हम और खुद को भोक्ता मानते हैं। Mahamoya, I become attached to things in this world. तीसरा महामोह, इस जगत से आसक्त हो जाते हैं। And I want to be them mine for my enjoyment. चाहते हैं कि वो मेरी हैं, मेरे भोग में लगे वो चीजें। And what's the result? उसका परिणाम क्या होता है? It's tamisha. तमिश्र। Tamisha means one suffers. तमिश्र मतलब व्यक्ति कष्ट भोगता है जीव उसमें से। That 5:22, I think. Ye samsvasyabuga tukayone evatyatyan vantakantisha nateshramate buddha. The sages have concluded. 5वें अध्याय का 22वां श्लोक में ये बताया है कि इस तरह जो इंद्रिय में लगते हैं फिर कष्ट भोगते हैं अंत में। They have concluded that one who wants to enjoy will suffer. सिद्धांत ये निकला है कि जो भोग करना चाहते हैं वो अंत में कष्ट ही मिलता है उनको। So you have to pay for your enjoyment with suffering. तो आपको जो है आपके भोग की कीमत चुकानी पड़ेगी कष्ट प्राप्त करके। It's factually suffering. वास्तव में ये पूरा ही कष्ट ही है। So one starts to suffer. तो फिर वो जीव कष्ट भोगना शुरू कर देता है, तमिश्र। And then at the end, under tamisha, और अंत में है अंध तमिश्र, fear of death. मृत्यु का भय। If the end comes, क्योंकि जो अंत में मृत्यु ही आती है। and then the body dies and I'm dying. शरीर की मृत्यु हो जाती है और मैं भी मर रहा हूँ। So this is practically the same thing. तो वास्तव में ये एक ही बात है। Under tamisha, that's abhinivesha. अंत तमिश्र अभिनिवेश, एक ही बात है। That's the fear of death finally. अंत में मृत्यु का भय। That and avidya is here called tamas. और अविद्या जो वहाँ पर कहा गया था यहाँ पे उसको तमस कहा गया है। But it defines tamas in the sense it starts with forgetting Krishna. तो यहाँ तमस को लेकिन इस तरह समझाया गया है कि पहली शुरुआत कहाँ से हो रही है? कृष्ण को भूल जाने से। That and then this raga and dvesha is mamoha. और जो राग और द्वेष है ये है महामोह। So it's quite the same thing, which is explained here. एक जैसे ही हैं, इसको यहाँ पे समझाया गया है अलग तरीके से। And that, but of course, the Vishwanath Chakravarti Thakur explains also it in another way, 5 kleshas. तो निश्चित रूप से जो चक्रवर्ती पाद हैं वो 5 क्लेशों को भी अलग प्रकार से समझा रहे हैं। And that is being said also, someone said, papam. और उसको भी यहाँ पे किसी बताया था, किसी ने कहा पापम। हाँ इसे Pap, yeah. So papam means sinful action. पाप का अर्थ है मतलब पापमय कर्म करना। So sinful action means every action not done in Krishna consciousness. तो पापमय कर्म का परिभाषा क्या है? कोई भी कार्य जो कृष्ण मानव में नहीं किया गया है वही पाप है। That so it will create reactions. क्यों? क्योंकि उससे जो है आपको उसका एक फल आएगा जो आपको भोगना पड़ेगा। And in Nectar of Devotion we learn this papam creates aparabdha karma. और भक्ति रसायन सिंधु में हम सीखते हैं कि ये पाप के माध्यम से अप्रारब्ध कर्म का जन्म होता है, Unmanifest in stock. जो कि अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अभी वो स्टॉक में हैं। That but this aparadha karma has 2 effects. लेकिन अप्रारब्ध कर्म हैं जो भी प्रकट नहीं हुए उनके 2 प्रभाव होते हैं। Who knows these 2 effects? कौन जानता है उन 2 प्रभावों को? Yeah.
That's kutam. That's the first thing. कूटम एक तो है कूटम, बीजम फलम तो 3 है ना? Right. So aparatma karma creates at one side the kutam, the desire to do this sinful activity again. तो अप्रारब्ध कर्म जो अप्रकट अवस्था में है उसका फल मिला नहीं, लेकिन वो क्या करता है, उसके दो प्रभाव होते हैं फिर भी। एक तो है कि वो पुनः उस पाप को करने की इच्छा उत्पन्न करता है, जैसे कूटम कहते हैं। But at the other side, it creates the parabdha also, a manifest reaction. दूसरी तरफ प्रारब्ध को भी वो प्रकट करता है कि जो कर्म हुआ है उसका फल आगे मिलेगा। इच्छा, डिजायर एंड रिएक्शन, बोथ। Yeah, desire and reaction, both. But when the reaction comes, the parabdha means the fall, the fruit comes, the result, the suffering. तो अप्रारब्ध जो कर्म है उससे जब इच्छा और जो फल भोगना है उसका जन्म होता है, जो प्रारब्ध कहते हैं। तो जब उस प्रारब्ध कर्म को फल हम भोगते हैं तो हमें कष्ट होता है। But it creates also the desire to do it again. लेकिन ये साथ में वो इच्छा भी उत्पन्न करता है कि इस पाप कर्म को पुनः करना है। And that grows into a bija, sinful desire, the decision, I will do it again. तो फिर वो धीरे धीरे बीजम में चली जाती है, बीजम अवस्था में, कि नहीं, मैं ये निश्चय होता है कि मैं इस कर्म को, पाप कर्म को फिर से करूँगा ही करूँगा। And then one does the papam again and it starts over again. तो फिर व्यक्ति पाप कर्म को कर देता है और फिर इस तरह से फल मिलता है, फिर इस तरह ये श्रृंखला चलती रहती है। But by performance of devotional service, लेकिन भक्तिमय सेवा के अभ्यास से, and then everything becomes shubha or auspicious. सब कुछ शुभ हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। These kleshas will disappear very quickly. ये जो क्लेश हैं ये बहुत जल्दी ही सब दूर हो जाएंगे। And how will that manifest itself? और ये कैसे प्रकट करेंगे खुद को? You become disinterested in material affairs. आप ये जो भौतिक जगत का जो भोग करना है, ये भौतिक जगत के मामलों में आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। I know many devotees in the beginning, they were reading so many books. मैं जानता हूँ बहुत सारे से भक्त हैं, शुरुआत में वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। And after starting for some time reading Prabhupada's books, they throw all the other books out. और शिला को किताब पढ़ने के कुछ समय बाद ही उन्होंने सारी बाकी किताबों को बाहर फेंक दिया। No interest in them anymore. कोई रुचि नहीं है बाकी किताबों को पढ़ने में। They get interest in Krishna. कृष्ण में क्योंकि रुचि आ गई उनकी। That so they develop forgiveness. फिर उनके अंदर क्षमाशीलता का गुण का विकास हुआ। They become truthful, सत्यवादी, simple. सरल। They become, develop gravity. Yeah? Gravity, seriousness, gravity. गंभीरता भी उनके अंदर, गंभीरता का विकास हुआ भक्ति में, जीवन के प्रति। We see when Narada Muni in his previous life was hearing from the Bhaktivedantas. हम देखते हैं कि नारद मुनि जो है जब अपने पूर्व जन्म में भक्ति वेदांतों का संग कर रहे थे, उनसे श्रवण कर रहे थे। After some time he became very sober. कुछ समय बाद वो बहुत ही धीर हो गए। He was a boy of 5 years. 5 साल के ही लड़के थे। Boys of 5 years want to play. वो तो 5 साल के बच्चे तो खेलना ही पसंद करते हैं। But he had no interest anymore. लेकिन नारद मुनि कोई रुचि नहीं। And the devotee becomes kind to everyone. और जो भक्त हैं वो फिर सभी के प्रति दयालुता का भी भाव उनके अंदर आ जाता है। So a devotee develops all good qualities of the demigods, Yasyasti, Bhakti, and so on. तो इस प्रकार से शुभदा मतलब भक्ति के अंतर्गत जो देवताओं के जो दिव्य गुण हैं उन सभी का विकास होने लगता है। And he's satisfied. और वो संतुष्टि का अनुभव करता है। Because Bhakti Parasanabhava Viraktir Anyatra Shesha
Trikayikakalam. So he experienced three things at the same time. तो बताया है कि भक्ति परेशान हुआ, विरक्ति अन्यत्र च। इस प्रकार भक्त एक साथ तीन चीजों का अनुभव करता है। He started to feel devotion for the Lord. एक तो भगवान के प्रति भक्ति में भाव का अनुभव करता है। And he develops a taste for the Lord. और भगवान के लिए रुचि का अनुभव होता है, विकास होता है। And detachment from this world. और इस जगत से वैराग्य। So these are the three that appear at the same time. तो ये तीनों चीजें एक साथ प्रकट होती हैं भक्त के जीवन में। So tomorrow, do we have a lesson tomorrow? Saturday? Saturday, we can have this one. Yeah. Tomorrow we can discuss the stages of advancement in Bhakti, Bhajana Kriya. तो कल हम चर्चा करेंगे कि भगवत भक्ति में जो भजन क्रिया है उसमें उन्नति के कैसे कैसे स्तर आते हैं। So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। I think we are over time. Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki jai. Madhurya Kanambini ki jai. श्री स्वामीनाथ भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। Jai.